Yeah, good morning, students. Today we'll be talking about this triple DS. In the last class, we have spoken about DS. We had seen that DS has certain disadvantages. So now, in order to curb those disadvantages, in order to correct those disadvantages, the scientists went in for this three key triple DS. Now, this is more secure than DES. The scientists did not want to change the pre-existing architecture. So what they did is they applied the algorithm of DES thrice, and that is how they came up with the technology of triple DES. Right now, triple DES is also known as three key triple DES or 3T DES, and triple DS, it has two variants. One is the 3 key and the other one is the 2 key triple DS. We'll first discuss what is a 3 key triple DS. Now 3 key triple DS, before using 3T DES, user first generates and distributes a 3T DS key K1 which consists of three different DS keys, K1, K2 and K3. In triple DS, we use three different keys, K1, K2 and K3. This means that the actual 3DS key length will be 3 into 56 is equal to 168 bits. The encryption scheme is shown in the figure. Now we'll just see how this works. We have a plain text which is of 64-bit text. Can we see the figure here? We have the 64-bit plain text. We apply the DS cipher and along with it the key K1. So again what we do is we again apply the DS reverse cipher and apply with it along with the key K2. Similarly, again, thirdly, we apply DS cipher again with the key K3. And what we get is a 64-bit cipher text. Now, this is for the encryption process. Again, for the decryption process, what we do is we input is a 64-bit cipher text. Now, here we are applying simple cipher, but here we'll apply reverse cipher. Here it was reverse cipher. So now here we are applying cipher. Again, cipher, reverse cipher. So for the decryption algorithm, we apply the encryption algorithm in the reverse order. So this is the DS reverse cipher. We have again DS cipher. We have the DS reverse cipher, and the output what we get is a 64-bit plain text. So this is how a triple DES functions. Okay. The encryption decryption process is as follows. We encrypt the plain text block using single DS with key K1. Now decrypt the output of step 1 using single DS with key K2. Thirdly, what we do is finally encrypt the output of step 2 using single DS with key K3. The output of step 3 is the cipher text. Now decryption of a cipher text is a reverse process. User first decrypts using K3, then encrypts with K2 and then finally decrypts with K1. Means the same thing but in the reverse order. Due to this design of triple DES, it is also known as an encrypt-decrypt-encrypt process. It is possible to use a 3T DS implementation for single DS by setting K1, K2 and K3 to be of the same value. This provides backwards compatibility with DES. Now, second variant of triple DS is identical to 3DS except that K3 is replaced by K1. In other words, user encrypt plain text blocks with key 1, then decrypt with key K2 and finally encrypts with K1 again. Therefore, 2DES has a key length of 112 bits. Now, triple DES systems are significantly more secure than the single DS, but these are clearly a much slower process than encryption using single DS. Single DS is faster than triple DS or double DES. So this completes our triple DS. I will explain the whole thing once again in Hindi also. हमने अपने पिछले क्लास में देखा था कि ट्रिपल डीएस में बहुत सारी खामियां हैं. उन खामियों को ठीक करने के लिए हम डीएस का ही आर्किटेक्चर यूज करते हैं, लेकिन हम उसको 3 बार यूज कर देते हैं. तो इससे क्या होता है कि हमारा जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है वो ज्यादा सिक्योर हो जाता है. तो 3DS दो प्रकार के हैं, ट्रिपल डीएस दो प्रकार के हैं. एक है 3 की ट्रिपल डीएस और दूसरा है 2 की ट्रिपल डीएस.
3 की ट्रिपल डीएस में हम क्या करते हैं कि एक 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट लेते हैं और 3 कीज लेते हैं K1, K2, K3। ये तीनों कीज जो होते हैं ये 56 बिट्स के होते हैं। तो ऑल टुगेदर की लेंथ हमारा 3 इंटू 56 168 बिट्स का हो जाता है। हम 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट पास करते हैं, उसमें हम डीएस एल्गोरिदम लगाते हैं अलॉन्ग विथ की K1। तो जो भी हमको आउटपुट मिलता है फिर से हम K2 पर उस पर डीएस एल्गोरिदम रिवर्स लगाते हैं, उससे हम डिक्रिप्शन करते हैं K2 लगा कर, और फिर हम एन्क्रिप्शन करते हैं K3 लगा करके। तो जो हमको आउटपुट मिलता है वो हमारा बन जाता है 64 बिट सिफर टेक्स्ट। इस प्रकार से हम एन्क्रिप्शन करते हैं, एक प्लेन टेक्स्ट को परिवर्तित कर लेते हैं एक 64 बिट के सिफर टेक्स्ट में। अब हम देखेंगे किस प्रकार हम सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में परिवर्तित करते हैं। सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए हम 64 बिट का सिफर टेक्स्ट डालते हैं, डीएस हम डालते हैं रिवर्स सिफर अलॉन्ग विथ की K3, फिर हम डीएस सिफर करते हैं अलॉन्ग विथ की K2, और फिर जो आउटपुट मिलता है उसमें हम डीएस रिवर्स सिफर लगाते हैं। तो जो आउटपुट हमको मिलेगा वो हमारा 64 बिट प्लेन टेक्स्ट हो जाता है। इस प्रकार से हम डिक्रिप्शन करते हैं। फिर से हम समझ लेते हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है।